Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is coordinate geometry. See, about coordinate geometry, it was first introduced by a French philosopher and mathematician, René Descartes. He gives us some idea about coordinate geometry in the beginning. Now we should know what is coordinate geometry. एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन we require two perpendicular lines. One of them is horizontal and the other is vertical. The plane is called the Cartesian or coordinate plane and the lines are called the coordinate axis. जैसे हम लोग vertically और horizontally दो लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं. जो हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस. सी, उसके बाद में जो कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, ये जो हम अभी बताए आप लोगों को, ये जो है दो लाइन हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 4 पार्ट में. और इस चारों पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स. दीज 4 पार्ट्स आर नोन एज व्हाट? क्वाड्रेंट. ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों मिलता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिजिन. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ऑरिजिन. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ऑरिजिन. जैसे हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे. अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है. एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज पॉजिटिव. ये बात तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्स और वाई के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई आर व्हाट? नेगेटिव. इसका मतलब x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है. चलिए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है? नेगेटिव होता है. लिसन स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because after telling repeatedly, even though you will face a lot of problem in writing how to write positive, negative, positive. See, you have to remember when both positive, that will come in first quadrant. When one negative and one positive, one means what? Here x-axis is negative and y-axis is positive, then we will put in second quadrant. In the third case, no problem. If both the value x and y are negative, we will put the value in third quadrant. And in the fourth quadrant, one value will be positive and one value will be negative. One value means what? X will be positive and y will be negative. Now see, here I have shown you how we will write. See, before explaining this part, we should know about what is abscissa and what is ordinate. Have you heard about abscissa and ordinate? Some of the students may be knowing about this one. See, the x coordinate is also called what? Abscissa, and the y coordinate is also called the ordinate. So sometime don't get confused. Instead of writing x coordinate and y coordinate, sometime question comes that what are abscissa and ordinate. So simply the x coordinate is what? Abscissa, and the y coordinate is what? Ordinate. And where both x axis and y axis meet is known as what?
origin. So look here, I'm showing. Here I have plotted the graph. The horizontal line is x-axis and the vertical line is what? Y-axis. Where both x-axis and y-axis meet, it is known as what? Origin. Here, instead of writing the value, I have represented 2 points as A and B. What I have represented? A and B. If you will get the value, you have to put the values that I will tell you while solving problem. Here A, x part, here you are observing, that is abscissa, and B, that is what? Y-axis, here I have written as ordinate. And C, A and B, together we call it what? Coordinates of a point. Is that clear? Now you have to remember some important points that will help you and that will help you in solving problems. So please you try to understand it very carefully. The x coordinate of every point on the y axis is 0. एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वाई एक्सिस पे क्या होता है? 0. अगर आपको ऐसा लिख करके क्वेश्चन आता है अगर x कोऑर्डिनेट किस पे है? y एक्सिस पे, तो वो क्या हो जाएगा? 0. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर 0 and y. Don't get confused, directly you write 0 and y. Similarly, the y coordinate of every point on the x axis is 0. जैसे x coordinate होता है every point on y axis is 0. Similarly, the y coordinate of every point on the x axis is how much? 0. So the coordinates of any point on the x axis are what? X and 0. Now see, an equation of the type y is equals to mx, suppose you will get the equation, represents a straight line passing through the origin. अगर कोई origin से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y is equals to mx. और हम लोग जानते हैं the coordinates of origin is what? 0, 0. ये चैप्टर जो है मेन है, इसमें आपको समझना है जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम कैसे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है. आज के टॉपिक में बस इतना ही. दूसरे टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे और दूसरे क्लास में हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. टिल देन, दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू.